Now, in this lecture, we start with the topic of Jacobians in advanced calculus. Jacobians definition: if f1, f2, fn are n real valued functions of n variables x1, x2, xn possessing partial derivatives of first order at every point of the domain of the function then the determinant curly f1 by curly x1, curly f1 by curly x2, curly f1 over curly xn. Similarly, second row, curly f2 over curly x1, f2 over curly x2, f2 over curly xn, and so on. Curly fn over curly x1, fn over curly x2, fn over curly x1. This determinant is called Jacobian of the functions. Jacobian of the functions f1, f2, fn with respect to x1, x2 and xn. So if these are functions and functions of n variables, then they possesses the partial derivatives of first order. Then the determinant, the first row is the f1 function f1 के partial derivatives with respect to x1, x2, xn. इसी तरह second row will be the partial derivatives of f2 and so on. And this determinant is called the Jacobian of the functions fi's with respect to xi's, and generally it is denoted by curly f1, f2, fn, curly x1, x2, xn, or Jacobian of f1, f2, fn. These are notations for the Jacobian. These are for functions of n variable. If we can take the particular case of three functions in three variables or two functions in two variables. Thus in particular if u, v, w are functions
of independent variables x, y, z, then the Jacobian of UVW with respect to x, y, z is denoted by curly u curly v UVW with respect to x, y, z. This can be written as JUVW and is defined as फर्स्ट रो में आएगा u के डेरिवेटिव्स, सेकंड रो में आएगा v के डेरिवेटिव्स और थर्ड रो में आएगा w के डेरिवेटिव्स. कर्ली u बाई कर्ली x, कर्ली u बाई कर्ली y, कर्ली u बाई कर्ली z. Similarly, second row में the partial derivatives of v with respect to x, y, z, curly v by curly z, and third row of w, curly w by curly x, w by curly y, curly z, and this determinant is called the Jacobian of UVW with respect to x, y, z. Similarly, we can do the case for two functions in two variables. Note that if we write partial derivative with respect to xj of the function fi is equal to, this is for partial derivative and this is for function fix. So what we have written, dj is equal to curly y curly xj. Then this can also be written as तो इसको क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट है कर्ली f1 बाई कर्ली x1, इसको लिखेंगे हम d1 कर्ली f बाई कर्ली x1. ठीक है, तो आएगा d1 ऑफ फर्स्ट फंक्शन. इसी तरह d2, अब इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, तो ये बन जाएगा d2. सो दिस कैन बी रिटन एज d2 ऑफ f1. अब पहली रो में तो f1 को ही लिखना है विद रिस्पेक्ट टू x1, विद रिस्पेक्ट टू x2, विद रिस्पेक्ट टू xn. तो ये हमारी हो गई फर्स्ट रो. इसी तरह सेकंड रो में f2 को लिखेंगे, f2 विद रिस्पेक्ट टू x1 आएगा d1 f2. ठीक है, d1 x1, d1 f2, d2 f2, dn fn. जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, अगर 2 लिखना है तो यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर देंगे. सो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं d1. अब fn जो लास्ट रो है nth रो, उसमें fn के पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखेंगे d1 f1, d2 fn, dn fn. Now we do the theorem. If f is a function from Rn to Rm, be a differentiable function, then
Jacobian of f with respect to x exists for every x in Rn. If f is a differentiable function. Since f is a function from Rn to Rm, where f is what? f1, f2, fn is a differentiable function, is a differentiable function. This implies each of f1, f2, fn, each is differentiable. This implies fi I vary from 1 to n is a differentiable at x. So each fi is differentiable. अगर डिफरेंशिएबल है तो इनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएंगे फंक्शंस के, ठीक है, तो ये सभी डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर जाएंगे. दिस इंप्लाइज derivatives of fi exists for all ij. अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएंगे ये सभी के सभी, तो ये डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट कर जाएगी. जो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगी तो जैकोबियन भी एग्जिस्ट कर जाएगा. दिस इंप्लाइज जैकोबियन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x exists for all x belongs to Rn. This is again a notation of the Jacobian. So derivative exist करके determinant exist करेगी, therefore Jacobian exists for a differentiable function.